आपको सीधे लिए चलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते हैं, सुनिए। 47th president and your 45th president. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. Winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them. And sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? No, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children.
Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, there's Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp, and you know the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay, which one, CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes in and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now, we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, say something. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate, and he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course,
even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her. She's shy. I've never seen her be shy before. Susie. They're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw all that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor. Do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash. And then I saw the fire pour out from the left side, and I put it straight. And it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it. And just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see. And I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No, nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated, the water. This was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. And it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. Hits the ball a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson. Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. He's hitting balls. Bryson. Oh, look at him. Oh.
He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we also have a man, Dana White, who has done some job. He's a tough guy. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him Marines because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went, and they said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it, and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy, what he does. He gets these fighters, and they really go at it, and it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time. It's doing so well. I'd like to ask Dana just to say a couple of words because people love to hear from him. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, busting with the boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you. तो देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, जिसके बाद उनका संबोधन आपने सुना। हमने असंभव को संभव करके दिखाया है। ट्रंप ने अपने 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो अमेरिका में 4 साल बाद राष्ट्र का चुनाव हुआ है। इसमें कमला हैरिस जो दूसरी उम्मीदवार थी, उनको भी लगातार वोट्स जो है बेहतर मिले, लगातार वो कंपटीशन में बनी रही, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार जीत का परचम लहराने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दी ट्रंप को बधाई। देखिए, अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिकी मीडिया चैनल के हिसाब से ये जानकारी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को बहुमत दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। उनका ये चुनाव जीतना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका की सत्ता उन्होंने संभाली थी। इससे पहले भी जीत मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका में पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के तौर पर संभाली थी साल 2017 में, और अब एक बार फिर से 2024 में चुनाव के बाद 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक ओम प्रकाश सर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से अमेरिका में अब तक इंतजार किया जा रहा था रिजल्ट का, आखिरकार रिजल्ट सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। जी हाँ, देखिए, ये जिस तरह से विक्ट्री हुई है ट्रंप की, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे या जो ओपिनियन पोल में जो रुझान था, उन सबको झुठलाते हुए ट्रंप ने मैसिव विक्ट्री दर्ज की है। आपको बता दें कि अभी जो ताजा ट्रेंड है उसके मुताबिक कमला हैरिस 226 और वहीं ट्रंप जो है जादुई आंकड़े से 7 सीटें ज्यादा 277 सीटों पे आगे चल रहे हैं। और जितने भी वहां पे जो आंकड़े बता रहे हैं उनके मुताबिक ट्रंप जो है मैसिव विक्ट्री के साथ राष्ट्रपति बनेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अमेरिका के जनता को संबोधित किया और सबका शुक्रिया किया जिन्होंने वोट दिया था उनको। खासकर एलन मस्क की बात की उन्होंने, और एलन मस्क की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उन्हें इस चुनाव में मैसिव विक्ट्री मिली है। उसके लिए उन्होंने उनका आभार जताया और साथ ही साथ अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि ये उनके सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। दुनिया के लिए भी ये मैसेज है
कि अमेरिका जो है अब फिर से जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है डगमगा गई थी उसको पटरी पे लाने के लिए काम करेंगे। और एक तरह से कहिए तो ट्रंप की विक्ट्री के बाद से जिस तरह से भारत में शेयर बाजार में जो उछाल देखने को मिला है, दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी, अर्थव्यवस्था में जितने भी है, सबको एक उम्मीद जगी है कि ट्रंप के आने के बाद जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उसके बाद दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, कहीं ना कहीं टक्कर में कमला हैरिस जरूर थी, लेकिन आखिरकार फैक्टर क्या रह सकते हैं जिस कारण ये जीत डोनाल्ड ट्रंप के पाले में गई, कमला हैरिस के पाले में नहीं? देखिए, चुनाव के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप ने था वो वहां की सुरक्षा को, अमेरिकी स्वाभिमान के मुद्दे को, अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को, जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, यूएस रूस और जो यूक्रेन का क्राइसिस है, या बाकी दुनिया में जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको मुद्दा बनाया। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में उन्होंने रोजगार और अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की, हेल्थ पॉलिसी को लेकर बात की, माइग्रेशन को लेकर बात की, अमेरिकी सुरक्षा की बात की, और इन सब चीजों से वहां के युवा जो है वो ट्रंप की तरफ आकर्षित हुए। और इस जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जैसा सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ट्विटर की बात कर रहे हैं, एलन मस्क की बात कर रहे हैं, वो तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया जो युवाओं के बीच में पॉपुलर है, जो सोशल मीडिया पे ट्रंप के लिए वेव क्रिएट हुआ था, कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिला और जिसकी वजह से उनको यह मैसिव विक्ट्री मिली। बिल्कुल, विक्ट्री मिल गई है। अब ऐसे में एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इससे पहले अगर हम बात करें भारत के साथ या फिर खुद पीएम मोदी के साथ संबंध की, तो डोनाल्ड ट्रंप के संबंध पीएम मोदी के साथ भी काफी बेहतर है। तो इकोनॉमिक तौर पर ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ हैं, और अब इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हो, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपस में सहमति की बात हो। इवन देखिए, जब यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत चल रहा है तो अमेरिका ने भारत की ओर रुख किया कि भारत मेडिएट करे। इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जब भारत की अपनी एक छवि है, भारत का अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बात की है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है उनकी समीक्षा की बात की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो इक्विलेटरल होंगे, कई सारी चीजें हम अब एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो है डॉलर और रुपये का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक्सचेंज है, उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। जो अमेरिका में जो रेट्स हैं, आपको जो वहाँ के रिजर्व रेशियो रेट्स है या फिर उसके इंटरेस्ट रेट हैं, उनको लेकर भी ट्रंप ने सुधार की बात की है। इसके अलावा आप अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो स्ट्रेटजिक लेवल पे भी है। अमेरिका जो है क्वाड में भारत के साथ है, 2+2 हम मीटिंग करते हैं अमेरिका के साथ। इसके अलावा G20 है या बाकी और कई भी ऐसे देश फोरम है जहां पे अमेरिका, इंडो पैसिफिक है, जहां भारत और अमेरिका क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशन को लेकर बातचीत तो है। उम्मीद है कि इस टेन्योर में और आगे बढ़ेगी और जो ट्रेड रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने को लेकर बात होगी। और जो भारत के युवाओं से जुड़ा हुआ जो सबसे मुद्दा है वो है H1B वीजा की, जिससे कोई भी भारतीय जो है अमेरिका में जाकर रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो उसकी संख्या भी हो सकता है कि ट्रंप के आने के बाद उनको रिवाइज करें, उस पॉलिसी को रिवाइज करें और फिर से जो काम के, जो उनका कहना है कि जो भी अमेरिकी इकोनॉमी में, अमेरिका के इनोवेशन में, अमेरिका के विकास में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए अमेरिकी द्वार खुला हुआ है। हाँ, वो कुछ उन लोगों पे सख्ती दिखा सकते हैं जो अनस्किल्ड हैं या इलीगल माइग्रेशन होता है, उनको लेकर अमेरिका सख्ती दिखाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी वो सख्ती दिखेगी कि इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करने के लिए अमेरिका क्या क्या कदम उठा रहा है। लेकिन H1B वीजा जो है उसको लेकर जो है अमेरिका जो है वो उसके दरवाजे खोलेगा और उम्मीद है कि उसमें भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और एक आखिरी सवाल और आपसे ये लेना चाहूंगी। जिस तरह भारतीय मूल की थी कमला हैरिस, और जब वो चुनावी मैदान में आई उस दौरान यहाँ पर भी उनके लिए पूजा पाठ, तमाम यज्ञ किए गए, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनके लिए क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? क्योंकि मैं चाहूंगी कि अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसे एक बार अगर आप समझा पाए यहाँ पे। तो देखिए, जो कमला हैरिस है निश्चित तौर पे एक सॉफ्ट कॉर्नर भारतीयों का कमला हैरिस को लेकर है क्योंकि वो भारतीय मूल की है। लेकिन जो अमेरिका में जो फैक्टर काम किए कमला हैरिस, वो था इकोनॉमी को लेके जो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। अभी मौजूदा वो उपराष्ट्रपति हैं और अभी जो सरकार है वो डेमोक्रेट की है और जो
जो बाइडेन जो है वो अर्थव्यवस्था को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका का जो है उसको लेकर जो है वहां पे लोगों में एक नाराजगी थी। उसके अलावा जो इलीगल माइग्रेशन है उसको कर्व करने में ये सरकार जो है बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाई थी। उसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लेकर भी वहां लगातार विवाद होता रहा था। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जो है अमेरिका में विवाद था और शायद उनको सॉल्व करने में या उनको लेकर अपनी बात रखने में कमला हैरिस जो है पुरजोर तरीके से नहीं रख पाई और वहां के युवाओं को नहीं लुभा पाई। इसी वजह से उनको यह हार देखनी पड़ी है।